I have these recordings. I will share. Okay. I will share along with you afterwards. Okay, we can Okay. start. Okay, so now before I can move on, okay, I would like to know that what exactly you know about the IBP, and from then I will get an idea how I will execute and how I will move on. Okay, so Okay. just give me some outline about the IBP. What exactly you understood till now, and what is your personal Okay. understanding about So, the IBP? Yeah. okay. So, as per my knowledge gained, I believe SAP IBP is a cloud software Okay. that provides a platform uh, of demand, supply, and the people who are looking to the solutions for it. Okay. Okay. And there is a word I don't understand with that term, that it's an ERP software or ERP Okay. something, which I'm Okay. not able to understand what it means actually. Got it. Okay. Okay. Got it. So main thing is that you know about that what exactly the server is. You understood till now that the IBP is a cloud solution. Okay. So you don't you said that you don't have idea about the ERP. Okay. So whatever the work you are exactly performing right now, along with this IBP as well, that is dealing with the ERP. The full Mhm. form of the ERP is Okay. Enterprise Resource Planning. Okay. 1 minute. Okay. I will open one Excel sheet and let me know what are your queries. Okay. In between, I can clear you at that particular time. Okay. Hmm. So here, let me know. My mic is little bit away from me, so my voice, if it is not audible, let me know just. You said you Okay. don't know about the ERP. Okay. So ERP is Yes. Enterprise Resource Planning. Okay, got it. So Okay. before moving on to the IBP, I would like to share some information which is associated with the ERP. Okay. See, Okay. this complete solution which we are building now, it is this particular thing all are moving around. They are just rotating around the business. Okay. So Mm-hmm. what is the main prerequisite for what exactly we are working on? That is for the business. Okay. Mm. Now you know the business can be a small or it can be big. Okay. 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 So the small scale, it may have, how we can say that a business is small or the business is big. It based on the financial background. Exactly. Okay. 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 So and also the revenue. Okay. Here, Okay. bigger revenues will be there. Now, when we talk about the business, it can be of, it can be run in a three way. Okay. So when we are when we are seeing the business, it can be, we can plan. Okay. So business, when it is when we are saying a business, it is a communication or it is a transaction which is going to happen between the two parties. Okay. Business is what? The Mm-hmm. transaction happen Between the two parties. between two parties. Okay. Now, it is not Okay. always essential that the business will happen between two parties. Is it? Am I right? Right. Yes. So, what happens? What are the two basic elements of business? What are they? First one is the customer, to whom we can call it as a buyer. Okay, and
The Okay. company. Sir, I think you need to share your Excel sheet as well because Yeah, yeah, I right will now share. it's Chill, chill, chill. I will share. I will share oh, everything. acha, oh, Okay. okay. No, I thought that So you're sharing on the screen. Oh, हाँ okay. हाँ 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 नहीं मैं ये सब बता के ओके Okay. इट्स नॉट ऑलवेज एसेंशियल ओके एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ मी इन हिंदी एज वेल Okay, ओके okay, इफ यू okay. फाइंडिंग इट बेटर ओके Okay. ओके हाँ Okay. तो हिंदी में बोल चलेगा कि इंग्लिश ही चलेगी As you are comfortable. No, As you are I'm comfortable. comfortable in both the language, so I don't have any issue. Okay, in between I can use You both the can just be language. bilingual. Yeah, yeah, Uh, okay. bilingual will go. Yeah, bilingual. Okay, okay, okay. So, the one is the customer, and second is the company, which is a seller Mhm. or a producer. Is it okay? Okay. So this, but most of the time, what happen within these particular two elements, within a seller and a buyer, okay, there are lot of other elements also involved, to whom we can call it as a third party. Okay, now I can give you one example. Mm. Okay. Okay, so when you are coming to a new place, okay, so when you're coming to Mumbai or any metro city, you are not Mhm. aware of that particular area, okay, but you are a searcher, so you are a customer, okay, and there were some lenders, or there were some household persons, means what you can say, घर मालिक हो सकते हैं, landlords were there, okay, so Mhm. you can directly approach them, but what happened in a strange area, you would like to have some person who is bit having a good awareness about that particular area, and also he can make assistance in searching prerequisite what exactly you're looking for, means you are looking for a flat, okay, Okay. so you are approaching towards a broker, Mhm. okay, now broker is what, he's a Okay. third party, got it. Okay. Now here what Mhm. happened here, when the landlord is there, but the main motive is what, you have a main what you can say, your main purpose is along with the landlord, but here the broker is also get involved, okay, so I would like to ask you, what are the two scenarios which has been built here. Now you have the first condition. First scenario is that you can directly meet the landlord. Okay. Second scenario is that you can Mhm. move via broker to the landlord. But the two elements, the customer and the seller, are the same. Is it? Means you and the landlord are the Okay. same. Okay. But in second scenario, there is the Okay. addition of the one another element, that is a broker. Okay. Right. But when you are in a first scenario, when you're dealing with the landlord, okay, in that particular scenario, what will happen, you will deal with the landlord directly, okay, and you will pay money, and the Mhm. landlord will play will provide you a service, okay. Okay. In second case, what happen, now you are going to pay to broker, and broker will provide you service, Mhm. okay, and and Okay. now you have to pay in additional to the broker for the service what actually he is providing to you, to access over to the particular landlord, okay. Okay. So what happened, now there are the two service providers, one is the broker and second is the landlord, is it? Okay. Okay, so likewise, Okay. this particular module is for the business. Okay, in this particular business, what happened? Mhm. There is the main communication is to happen between the seller and a buyer. But in Mhm. between these two parties, there are the numerous persons who are getting involved. Okay, so what happened? Okay. Always it doesn't happen. The your business will remain on the domestic level. Sometimes it will go to the international level and as well as to the global level as well. Okay, so
Mm-hmm. Likewise, when your business is moving on to the global level, you have to create a supply chain units. You have to create what? Okay. Supply chain Supply units. chain units. Okay. So now just tell me, what do you understand by the supply chain? I already told you the scene of the business. Okay. Based on first scenario and based on second scenario, what do you understand by the supply chain unit? Supply chain unit means the broker who is providing us with the services. Hmm. Supply chain units means the units that are helping us in the process of supplying things. Exactly, Maybe. exactly. You are going right. Yeah. So in scene one, we have buyer and seller. Okay. In next condition, we Okay. have buyer, Uh, we have broker, then we have seller. Okay. So here, Sir, sorry to interrupt. yeah, I yeah, think you're writing in Excel, right? yeah, yeah, yeah. But the screen is not visible to me. That's what I was saying earlier. The screen Okay, right okay, now is visible to me. On the screen is okay. the One minute, PowerPoint. one minute, one minute. Okay, 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 okay. And 1 minute. Mm-hmm. Okay, now it is visible. Now it is visible. Yes, it is. Okay, yeah. So all the things what I have written over here right now. Okay, just get through it. Right now I am Hmm. just asking you regarding the scenario one and the scenario two. Okay, in the scenario one we have the Right. buyer, and in the scenario one we have the buyer one is there and the seller is there. So it just constitute our Okay. one supply chain. Okay, supply chain for this particular scene. Okay, Okay. now here is the another supply chain. This is also supply chain. Hmm. The So, elements what are is in supply chain basically? what you said in the same term only. Supply means we have to fulfill the requirement of the some person. Okay, the customer is always coming with a demand. Based Okay. on that particular demand, when you are coming to the Okay. producer means the company is the producer. Okay, based on that particular demand, the company Hmm. is going to create something in order to fulfill that particular demand. Okay, in order to that so the chain is creating from where? From customer, then it is going to company. Okay, again it is reverting back to Okay. the customer. So this is the simple supply chain. Okay, now Okay. that's why I told you the scenario two. Here, the two elements were involved in the first scenario. Here, three elements were involved. Hmm. Three Got it? elements are involved. Three So the elements involved. demand is Huh. okay. Right now there is the concepts of the dependent demand and the independent demand. Okay, so right now what Okay. happen when the buyer means when you move on to the broker, so this demand is a dependent demand. Hmm. Okay, because it has been triggered by the buyer, means you Right. are a customer. Okay, now Okay. when it is coming to the broker, Hmm. that demands become independent. Now it is the sole responsibility of that particular broker to fulfill your demand. So he is looking for a seller. Okay. Okay, so when he is looking Hmm. for a seller, that demand becomes the independent demand, and now the broker is fulfilling its own demand. Okay, when it is fulfilling its own Hmm. demand, then indirectly it is going to fulfill your demand. And in order when the broker fulfill its own Okay. demand for in order to give service to you, okay, he asks you some certain amounts from your from his own from his side. Okay, he wants certain convenience services charges. Okay, so if you have Hmm. a 30,000 or Okay. 50,000 as your monthly rent, then you have to pay additional 50,000 to the broker as well. Is it like that? Broker So as well. you are Yeah. paying for the service. Now got it? Hmm. Okay.
So Got it. why I'm going through these particular aspects, this has nothing I had to deal with, but the condition is that if you are not understanding a business, you are unable to run any Hmm. ERP. And this so the software on which you are working is the SAP. Okay, the full form of the Hmm. SAP is systems, applications, and products. Prod- so, prod- products in data processing. Okay, so this is Okay. exactly what the SAP. And what is a SAP? It is a system software. For what reason it is created? It is created as a solution. What solution? It is a software solution. What is it? It's a software solution for enterprise resource planning. Got it? So what is ERP? That's what my question is. I understood that Okay. we are using SAP Now, for now let's. system software and the Yeah, yeah. solution. Yes, yes. I'm coming. I'm coming. So, till now, this all the scenario you get to know that what exactly I speak right now. Yes. Okay, I spoke right now. Okay, Hmm. so this ERP, enterprise resource planning. So enterprise means any company. Why company? Company. If I am asking you, you are owner of one company. So what exactly the company will be comprised of? Okay. Means what are the elements the company should have? Let me know. I will fill here. Based on your judgment, I will fill all the data here. The company is comprised. What are the components of the company? Let me know from your side. Whatever the understanding you have, just let me know. There is nothing wrong or right. Uh, as in the structure of the company. Yes, yes, yes. As in structure of company. Um, there are different departments in a company. Okay, okay. Department is there. Like we have a financial department, we have the Okay, human resource departments. That's all okay. Financial. comprised together Acha. to meet the needs of the company. Okay, okay. So we have different departments. We have HR department. Okay. We have operations Yes. department. Okay. Operations department, material Uh, procurement department material that procurement might be dealing with the department. product production. Okay. Then the production is there. Yes. Then the Production. marketing, Okay. Marketing is there. Then okay. I think this much is okay. then the Okay. sales department, right? Yeah, yeah, There's yeah. so Sure. many that means Yeah, that yeah, as per me that makes a company. yeah, yeah, yeah. Sure, sure. Okay. The sales department is there. Okay. So this much department, and it can move on based on the requirement. We can Yes. necessarily we can make a certain customization, and we can say नहीं ये मेरी company है मैं कोई भी department निकाल सकता हूँ. Okay, so we can move on. Hmm, So right. likewise, so when they are coming in association Okay. of these departments Hmm. in a hierarchical manner will lead to form one enterprise. Got it? Now understood? Right. And that enterprise is nothing but what? Your company. Company. Now understood? Company. Yes. When you are moving to some gift stores within your city as well, you will get to know this enterprise, that enterprise, electricals enterprise. Okay, they're keeping awards like that, no? Yes. Okay. So Hmm. when we are talking about the finance, so what exactly the finance will look for? Money. Okay. Money. When we look after the operations, what exactly they will look for? The human resource. Is it? Okay. Yes. And machineries or any software, Hmm. no matter with which industry it is dealing. Okay. When we Hmm. look after the material procurement, then it will look after the materials. It may be it may be raw,
it may be semi-finished, or it may be We're finished. finished. Okay. And when we look after the production, it will look after the human resource. Mm-hmm. Okay. Then then machineries, and what you can say, any components also, components, Okay. components. Okay. And when you come to the sales department, with what they will look after, सेल्स डिपार्टमेंट के पास क्या रहेगा? Selling of the products, ओके, uh, सेलिंग प्रोडक्ट्स, रिक्वायरमेंट्स, details related to the sales रिक्वायरमेंट्स, requirements. कस्टमर इंफॉर्मेशन, इज इट? Right. ठीक है, तो इस प्रकार से Right. आपके पास में सब चीज़ें अवेलेबल रहेगी. ओके, तो ये हो गए रिसोर्स. Mhm. जब हम ये सभी रिसोर्स की जब प्लानिंग करते हैं, व्हेन वी आर पुटिंग ऑल दीज Okay. रिसोर्सेज इन अ चेन, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डीलिंग विथ ईच अदर. ओके, so then we Right. have to then we are going to plan. Okay, then we are making a plan. So in that plan, what will happen, we connect the finance with operation. Okay, then operation with Mm-hmm. material, with HR, then with Sales. components or sales. Okay, sales. ठीक है. So अब हमारा क्या होता Right. है, now what will happen, now we can club all these things. Now you understood, Okay. now you understood enterprise. Yes. Okay, now you understood resource. Okay, Resource means all these departments. yeah, resource means anything. You, suppose you are a teacher, no? Okay. Oh, So you have been in one of the right. you have been the education institute. Okay, now can I call it as a business organization as well? Okay. It's a business only. You're taking money for the service what exactly you are provide for. Okay. Yes. Yes. So what Yes. happened? What is the Mhm. hierarchy? What are the resources exactly the education institute is going to carry out? Hold on. The resources were the teachers, there were the peons. Okay, there were the students. There were the Mhm. desk, benches, materials. Okay, then Mhm. you have HR department as well over there. Then you have the clerical department over Mhm. there, who are keeping a records of each and every activity, what exactly happening within the organization. So for that particular company, those were the resources. Now the definition of the resource, it can change. Right. Okay, what you can say, like the Krishna is saying, the soul will remain the same, only the costumes will get different. Mhm. Okay, each and every time the Okay. soul is going to take a new costumes. So likewise, in this particular session, in this particular scenario, in this world also, every business, the main theme point will be the same. Only the thing is that its color will it will remain, it will keep on changing based on the scenarios. Okay. Okay, for that Okay. particular sake, you need to have a versatility of the understanding. Okay, no, this is the thing, Mhm. yeah, I got it, like that. So now, and planning also you understood. Okay. Planning means what? If you have the guest in your home, or suppose you have one semester Mhm. examination is going to conduct. Okay, what is today, is just 17th. Okay, on 18th, tomorrow itself, Mhm. one exam is going to conduct. So what exactly you are going to perform? So you are We're going to going to do the perform. planning. You are going to plan. No, you are not directly. You are not moving on and directly you will Absolutely. create a paper. You will directly move on to create a Mhm. questionnaire over there, and you just put. Previously, you had to Mhm. schedule. Okay, 3 days, 10 days Mhm. before that, you are scheduling. You are making a proper worksheet. In that worksheet, you will get to know the all the Mhm. syllabus. Okay, so these are the plans. Mhm. Plan means what? What Right. exactly I have to perform in the forthcoming future. Okay, and it is not always a Okay. future, it will Okay. present also. And okay, like that. Mhm. So so right now you understood what is enterprise, so what is resource, and what is planning. Okay, समझ आ गया अभी आपको, एज अ टर्मिनोलॉजी, एज एन Yes. टर्मिनोलॉजी. So,
Uh-huh. Yes, I understood. Okay. Now I will go to the next segment. Now, with this particular section, what exactly we are going to perform? Okay. What are the job prerequisites or the job requirements you need in the means you are going to perform when you are getting to this particular software? Okay. You know, data analyst. Okay. One, just a question Yeah, yeah, before yeah, moving ahead, sir. yeah, yeah. You just said that when we use SAP, that Hmm. means it's providing us a software solution. That is some mechanical solution, right? A Okay. solution Yeah. based in a Yeah, yeah, software yeah, 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 for yeah, yeah. enterprise resource planning. Yes. So enterprise is the company. Yes. Resource means the resources. It could be anything. So to Exactly. manage those resources, Hmm. we are looking for a solution from a third person, right? Yes, yes, exactly. Is Now, that what now, SAP means? yeah, yeah, yeah. Is that what the SAP means? SAP, what happens? Um, you so likewise, you are from the. I'm taking your example only. Okay, so you are in a education institute. Okay. Okay, so your organization is Mm-hmm. running a certain business. Oh, sorry, certain educational trainings you are going to provide. Okay, in that what happen? If suppose certain things, if suppose some new concepts is going to be blooming off. Okay, so in that particular what will Mm-hmm. happen? You call some other person who is good and who is having a good knowledge in that particular subject. Okay, and then he can deliver a lecture over there. Okay, and then he can take a money and he can move on. Is it happened sometime? You Mm-hmm. are going to conduct a guest lectures or something like that. Okay, so who are they? Who are those person? Those are Yes. the consultants. And as a teacher, you are also a Okay. consultant. Okay, but the paradigm of the consultants is differing from situation to situation. Here you are consulting with the priorly known knowledge, and the another person to whom you have given a charge to conduct that particular guest lecture is having a knowledge onto that specified Mm-hmm. zone, as that specified module, what exactly he is going to deliver, and what is your basic necessity. Okay. Okay, got it? Mm-hmm. So likewise, what happened? Got The it. SAP, I told you the when you are performing a business, the business can be happen on the domestic scale as well as the business can happen on the global scale. Okay, in a domestic scale, Okay. what happen if I find a certain discrepancy or I find a certain kind of the uncertainty or the blockage in my business, I would like to ask for the another person or my neighborhood businessman that I have this kind of the thing problem. What exactly I can do? Okay, so Mm-hmm. in that particular scenario, that person will come and he will give the mindful knowledge or he will give a certain suggestion based on his experience. Is it like that? Mm-hmm. Okay, now right Okay. now the business is happening on the global platform. Okay, and the SAP is intervening in that particular scenario. Okay, now whatever the things which is exactly going on to the paper, which is happening on the paper, now we are plotting those information in the digital format by using Okay. by using the digital platform like that of the SAP. Okay. Okay, so in that SAP, what will happen? Okay. Whatever the architecture or whatever the hierarchical manner of the corporate hierarchy will be there. You are going to plan everything over there. Okay, and again I am telling Okay. you here, it is not an exact business it is going to perform. It is going to perform the business based on the data processing. Okay, so the SAP itself is not creating any data. Are you getting right now? SAP Yes. is not creating any data. You are the source person. Mm-hmm. SAP is just a program which is aiding you, which is providing a aid to you in order to have a proper solution that what will happen and how this is going to perform. And when the when the SAP is getting designed, no, the designers of the SAP, they were the professors of the prestigious, or they were the images professors of the prestigious universities. Okay, most of them, they are from the Mm-hmm. Harvard, they are from the Boston, they are from the Massachusetts, anywhere else. Okay, so when they Mm-hmm. come on the single platform and they have one organizer,
The one person who is the organizer, he is good in the technical aspect. So what happened, they thought Mm-hmm. that why, as the business is directly happening on the paper, now they have the Mm-hmm. business which has a different geographical zones. Okay, and based on that Mm-hmm. geospatial orientation of their, what you can say, business, so they have business on to the different points. So how I can manage it? They have certain questions over there, they have different kind of the questions. So Mm-hmm. the different kind of the economists, different kinds of the person who are from the HR background, different kind of the persons who are from the marketing background, different kind of the professionals who are dealing with that of the economical studies, okay, and the doctorates from different zones, they came up, Mm-hmm. uh, and they for, and they just constitute a one integrated program, okay, and they put their knowledge over there, Okay. because the lot of the study is going to be conducted within India as well and outside India as well. Okay, so they are coming onto the certain Okay. algorithms, they form certain studies, they get to know what are the exact solution we Mm-hmm. have to come up with, what are the exact problems the person is going to face off. So based on that particular scenario, so they have deployed certain solutions. So when they are deploying certain solutions, Mm-hmm. so the SAP is the compilation of all the solution measures. Okay, afterwards the SAP is Okay. getting erased out. This is the history of the SAP. Okay. So without understanding the history, we can't move Okay. on. Okay, that's why. So this is the compiled Mm-hmm. Mm-hmm. solution. Okay, which is providing to the business person what exactly he has to perform in the forthcoming future, and what data analytics he has to perform. So I am coming with that Okay. particular right now. Now I will go through that, what are the exact professions in which exactly the SAP is going to play a good role. Okay, and for what profession Okay. exactly the SAP is the requirement. So you know the data analyst. Okay. Okay, next you have business Mm-hmm. analyst. What is the difference between the two? Nothing, nothing, nothing. Data business is also dealing with Okay. the data. Now it is, what I am saying. Mm-hmm. These are the availability when you are going to the LinkedIn portal or anything anywhere else. No, you will get to know. No, data analyst. Mm-hmm. Okay, some Okay. analyst, some Okay. business analyst. Okay, so likewise I Common just, common word. yeah. आत्मा ही की कोई अलग नहीं है. Okay, so Okay. बस एक ही है, बस अलग अलग तरीके से बात करना है, वो चीज़ है. डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है. ओके, सो Okay. यहाँ पे ये चीज़ है. सो इन दिस डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, so they are dealing with data. Okay, so what is the Mm-hmm. main milestone what we exactly have, what is the main, I can assume of this particular discussion is the data. Everything is Okay. revolving around the data. Data. Yeah, data is the Okay. sun of our solar system, of the SAP. Okay, Okay. everything Mm-hmm. revolve around the data. And I want to tell you one thing. SAP is not creating any data. Okay, SAP is just Yes, it's configuring a. just get it's Huh. yes, it's conflicting the data which is being provided by the Yes, enterprise. exactly. And based on the algorithms and based on the programs which has been said, it is just recreating a data Mm-hmm. with the Mm-hmm. with the prerequisite judgment what exactly we need for. Okay, so it is not a generator; it Okay. is just a processor. Okay, Okay. SAP is just a processor. Okay, of data. Who is the producer of the data? Business. The business or the enterprise or the Business, company. business domain where the consumer, business is बोल दूंगा मैं, बस इतना ही है. Business is the producer of data. Okay, ऐसा बिजनेस है प्रोड्यूसर. और बिजनेस में कुछ भी चीज़ आ सकता है, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है. बस इतना है कि फिजिकली Mm-hmm. या वर्चुअली हमको कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं. वी हैव द पेमेंट प्लेटफॉर्म लाइक डेट ऑफ द Mm-hmm. पेपाल. हमारे पास में पेटीएम है, ये है, सब है, Mm-hmm. हमका सब चीज़ें हैं हमारे पास में. Mm-hmm. बट द कंडीशन इज़ डैट दे आर जस्ट ए प्लेटफॉर्म. जो भी होना है ट्रांजेक्शन, वो दो पार्टी के बीच में Okay. होना है.
So उसमें they are also taking their service charges over there. So they are taking money for the service what exactly they are going to provide you. Got it? Now moving Okay. on to that. Okay. Now I will come that what exactly we are going to perform. I told you that the data analyst, business analyst, and so more. Some project management प्रोफेशनल हायर Mm-hmm. प्रोफेशनल कॉर्पोरेट Mm-hmm. बॉडीज़ ये वो ठीक है. जिस आपको जो तैयारी करना है वो तैयारी Mm-hmm. करो. आपको जैसा बनाना है. समोसा की फैक्ट्री बना के रखे हो तो अंदर मैनेजर बैठा दो जो खाना बनाते रहेगा उसको फूड मैनेजर ई Mm. मैनेजर जो नाम रखना वो नाम रख दो. लेकिन जो एक्टिविटी है वो एक ही Okay. परफॉर्म होनी है कहीं पे भी. ओके. सो राइट Okay. नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म. तो ऑपरेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे हम लोग क्या कर सकते हैं. पहला हम करेंगे एनालिसिस. दूसरा हम परफॉर्म करेंगे एनालिटिक्स. सो Analytics. it's a simple question from my side to you. You are a teacher, okay? So what is the difference between the analysis and the analytics? I was about to ask. Analysis is Hmm. um, analyze. It's related to analyze that what I have interpreted so far. One minute, मुझे 1 minute. क्या समझ में हाँ, आया yeah, उसका I can. डेटा पढ़ के. ओके मैं आपको कुछ चीज़ भी प्रोवाइड करता हूँ. अब यहाँ पे मेरे पास में डेटा है. ओके. अब वो डेटा एसोसिएट है. Okay. प्रेजेंट पास्ट डेटा है मेरे पास में. प्रेजेंट डेटा है Mm-hmm. और फ्यूचर का डेटा. क्या फ्यूचर का डेटा आ सकता है हमारे पास में? अब मुझे Hmm. ये जो मैंने टेंसेस दिए हैं आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. लाइकवाइज जस्ट टेल मी दैट Mm-hmm. व्हाट इज़ द एनालिसिस एंड व्हाट इज़ एनालिटिक्स. Okay. Analysis is past को देखकर present को analyze करना. I think. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. पिछला जो हो गया हाँ नहीं पिछला देखो. जो हो गया है उसके बेसिस पे उनके हाँ ग्राउंड्स को प्रेजेंट के लिए हाँ करना कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली. विल हैपन इन प्रेजेंट. एग्जैक्टली. एंड व्हाट अबाउट एनालिटिक्स? एनालिटिक्स वुड बी लाइक प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट करना. एग्जैक्टली. बिल्कुल सही. बहुत दिन बाद कोई मिला ऐसे. ओके. जो ज्यादा पढ़ा हुआ है. हाँ नहीं बिकॉज आई हैव ऑल्सो मीन्स माई पास बैकग्राउंड इज आई हैव बीन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज एज वेल. ओके. तो आई ओह ओके अंडरस्टूड कि ओके. सामने वाला बंदा. सो आई जस्ट ट्रांसफॉर्म टू द कॉर्पोरेट बॉडी like that. Okay. तो ये चीज़ें हैं. Okay. So we are performing the analysis as well as the analytics. Okay. Got it. इन एसएपी. Yeah. In SAP. In SAP, no. As in general. ओके. Okay. SAP is only a solution. एज इन जनरल. ओके. हाँ in general. Solution, right? In What? general, हाँ this because. is this Hmm? is what the requirement of the business from us. Yeah. Exactly. This And what yeah. the Uh, business might be requiring. yeah. Now what happened? I'm telling you, when you're running a certain business, okay, you are now creating to have a certain new business in your area, okay, but you don't have any idea. You don't have experience on that particular zone in that particular domain. So how you would like to create any enterprise in the Mhm. one area, and that was a new. Because and also you have inputted a lot of inventories and a lot of capital has been invested on that particular enterprise. Okay, so you are not a moron that Okay. without knowing anything you are going to perform. So first of all, what you will do, you will get to know, you will understand the area. Okay, you will get to know what is the requirement of that particular area. What is the nature of the person or the nature of the what is the demographic and what is the demography as well as what are the taste of that particular person who are dealing there. Okay. Mhm. So like that. So what will happen? You will look onto the past and you will look onto the future. You will look onto the past. Future. From past. You will look onto the past. You will have the past data. You will get to know that how exactly Right. the other business with which exactly you are going to enter into the market is performing. Okay, that particular product or Okay. that particular enterprise will play a reference for you. Okay.
Based on that particular thing, Mm-hmm. particular data, you will analyze, and based on that analysis, you will perform what exactly you have to perform in the present. Got it? But Okay. in the forthcoming future, okay, you have to manage. Okay, now you do now then how you will manage for that particular thing? Your insight and your instincts play a very good role. Got it? Okay. So on that Mm-hmm. particular instance, and based on your experience, you will say चलो आज अगर पाँच अभी हमारे पास में अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके बेसिस पे आने वाले कुछ दिनों में हमको इतना इतना मटेरियल लग जाएगा, हमको शायद हमको 5 किलो या 6 किलो सर्टन चीज़ हमको लग जाएगी इतना इतना सर्टन बनाने के लिए, ठीक है, तो हम चला लेंगे आगे। Mm-hmm. ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ आई आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। Okay. ठीक है, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट के एक्सपीरियंस से, और प्रेजेंट और पास्ट के दोनों के एक्सपीरियंस से आई। अब यहाँ पे आपके पास में जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं आप क्या रखोगे आने वाले फ्यूचर में, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कीप इन द फ्यूचर। मतलब कितनी आपको अवेलेबिलिटी कितनी Okay. रखना है। सपोज आपका रोजाना आपकी एक समोसे की शॉप है, और वहाँ पे नियर अबाउट हर दिन के 100 पीसेस बिक जाते हैं। Mm-hmm. ठीक है, अभी फ्यूचर का आपको प्रेडिक्शन करना Okay. है, आने वाले फ्यूचर में सपोज और एक हफ्ते का आपको Mm-hmm. प्लानिंग करना है वहाँ पे। ठीक है, और फ्यूचर में जो करते हैं ना हम उसे Okay. प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं, अब फ्यूचर में कितने Okay. रखना है। तो भाई अभी तक तो मेरी जो मेरे पास जितना डेटा आ रहा था, जितना मेरे पास बिक्री हो रही थी वो 100 समोसे की हो रही थी। अब 100 समोसे की बिक्री अगर अभी तक की हो रही है, तो आने वाले समय के लिए मैं उसको अपना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। ठीक है, और मैं 100 के हिसाब से अपनी तैयारी रख रहा हूँ। Okay. अब नो मैटर कि हो सकता है वहाँ पे मेरी Okay. डिमांड बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन अगर कम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गई तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या, हम इसी Mm. चीज़ के लिए हम लोग किस पे आए हैं, हम लोग आईबीपी पे आए हैं। Okay. ओके, तो आईबीपी हमको क्या दे रहा है यहाँ पे? एनालिटिक्स। आईबीपी क्या परफॉर्म कर रहा है? एनालिटिक्स। अब आईबीपी जो नॉट, Analytics. हाँ एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा है। अब एनालिटिक्स किसको किसको देख के परफॉर्म कर रहा है? पास्ट के डेटा को देख के परफॉर्म कर रहा है। ओके, Okay. पास्ट डेटा को देख के परफॉर्म कर रहा है एनालिटिक्स। अब ये जो एनालिटिक्स जो परफॉर्म कर रहा है आईबीपी, अब यहाँ पे आईबीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड Yes. बिजनेस प्लानिंग। ओके, तो इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग क्या होता है? अब ये इंटीग्रेटेड शब्द क्यों जोड़ा है उसमें? बिजनेस प्लानिंग तो आपको भी समझ में आ गया। ओके, बट व्हाट इज द रीजन दे हैव Mm-hmm. इंट्रोड्यूस द वर्ड इंटीग्रेटेड ओवर देयर? एनी आइडिया? Because all the businesses are in, because all mm, because ओके, मतलब गॉट इट गॉट इट। डिपेंडेंसी है बहुत सारी एक चीज की एग्जैक्टली, दूसरे चीज के ऊपर। एग्जैक्टली डिपेंडेंसी है। क्या है? डिपेंडेंसीज है। ठीक है, अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? मीन्स माई फाइनेंस डिपार्टमेंट, कनेक्शन है, हाँ, मतलब एक। हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेट होगा तो फाइनेंस बढ़ेगा। ओके, हम्म। ऑपरेशन करने के लिए मटेरियल की हम्म। रिक्वायरमेंट, मटेरियल रहेगा तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और अगर मटेरियल होगा तो हम्म। प्रोडक्शन भी होगा, और अगर प्रोडक्शन होगा तो सेल्स भी हम्म। होगा। गॉट इट? तो ये सब क्या हो गया? चेन है ना। राइट। Now all these things are, all these modules are हम्म। integrated to each other. For that particular thing they have referred the word integrated over here. Okay, means they are getting a data ओके। from the integrated side. It may be from the finance, it may be from the operation, it may be from the material, it may be from production, it may be from the sales, and so on. Okay, वहाँ पे extended warehouse management, ओके। warehouse management, ओके। anything it will be there. Okay, so right now, now you get to know what exactly we are going to perform. This is the IBP, and this is यस। what exactly I ओके। mean to, because my slides are also pertaining to these particular things as well. Okay, I have not moved on to slides right now. So ओके। within Excel I told you this particular thing. In this particular nutshell, whatever the knowledge I have encapsulated right now here, let me know what are your doubts in this particular segment. I will clear everything, and then we will move on. Then I will proceed to the PowerPoint presentation. ओके।
So far all the things are clear. My ओके doubts, bit of my doubts that were there, वो सब clear हो गए हैं. ओके ओके। अब मैं कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो कुछ कंसेप्ट होते हैं ना, मैं वहाँ पे यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। ओके, Mm-hmm. यहाँ पे Okay. सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, मैं आपको पूरा सप्लाई Mm-hmm. चेन में तो मैं यहाँ डिस्कस यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि मैं कोई बिजनेस का ट्यूटर नहीं हूँ यहाँ पे। ओके, मैं एक टूल सिखा रहा हूँ मैं आपको। Mm-hmm. बट टूल पे जाने के लिए यू शुड नो द बेसिक एलिमेंट्स विच आर द प्री रिक्वेस्ट नेसेसिटी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ऑन द IBP। अदरवाइज आपको अगर IBP आ भी गया Okay. तो कोई काम करना है, बकवास है, फेंक दो आप उस चीज़ को, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सो Okay. IBP, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन तो आपको समझ में आ गया है ना। सप्लाई Mm-hmm. चेन में पहला आपका सिनारियो में बायर और सेलर आया था, उसके बाद में बायर आया, फिर क्या आया, ब्रोकर आया, Broker. और फिर सेलर आया। ओके, तो ये हो गया आपके क्या, सप्लाई की चेन। अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग Mm-hmm. इसको सप्लाई चेन यूनिट्स या फिर प्लानिंग यूनिट्स कहते हैं। ओके, अब पहला वाला जो पहला सिनारियो था, ठीक है, जब मुझे प्लान करना किसी चीज़ को अभी Mm-hmm. आपके सप्लाई चेन में, तो मैं उसे यूनिट में, सपोज यू हैव अ फ्रेंड, ओके, यू हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट। तो हो सकता है ना कि Mm-hmm. आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है शायद वो किसी और के साथ में उसकी दोस्ती और ज़्यादा हो, तो उसका फ्रेंड सर्कल अलग होगा। Mm-hmm. ओके, तो हम उसको Mm-hmm. बाइफरकेट या फिर हम उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हम उसका फ्रेंड सर्कल देखेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें हम पता चलेगा कि नहीं कौन सा बंदा है जो म्यूचुअल है, सब लोगों से डील कर रहा है, और उसकी जो चेन है या फिर उसके Okay. जो कॉमरेड्स है उसके साथ जो मिले हुए, वो कितने कितने हैं। लेकिन वो कब हो सकता है, जब कोई चीज़ झुंड में हो। ओके, Mm-hmm. गॉट इट, यू हैव टू ट्रांसफर वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन Mm-hmm. टू अनदर पर्सन। ओके, लेकिन जो आपका वो जो दोस्त है वो म्यूचुअल म्यूचुअल मतलब ट्रिपल म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, बहुत दूर है, उसमें डेल पॉजिटिव Okay. पॉजिटिव चार्ज गया हुआ है, समझे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो उसके पास Mm. जाने वाली है नहीं। तो क्या होगा, आप पहले क्या करोगे कि आप अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड को बताओगे, वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड को बताएगा, वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड को बताएगा, और फाइनली वो उसके पास पहुंचेगा। ओके, देन यू विल गेट टू नो कि द Okay. इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन पास फ्रॉम द सोर्स टू द क्या बोलते हैं एग्जैक्ट टारगेट डेस्टिनेशन। ओके, तो इस Okay. कंसेप्ट को Okay. आपको समझना पड़ेगा। ये होता है सप्लाई चेन, और इसी में आपकी यूनिट्स होते हैं, तैयार होते हैं। तो अब यूनिट, जैसे हमने सिनारियो वन Okay. देखा था, तो सिनारियो वन में सप्लाई यूनिट क्या हो गया, बायर और सेलर, बरोबर। सिनारियो टू में बायर ब्रोकर, ये एक यूनिट हो गया, फिर Mm-hmm. ब्रोकर बायर, ये दूसरा यूनिट हो गया। ओके, फिर ये एक वो एक चीज सेम नहीं, इट वोंट बी सेम बायर नहीं ब्रोकर हो या ब्रोकर बायर हो. नहीं, वन मिनट, हाँ एक कॉल आ रहा है, वन मिनट जस्ट, वन मिनट। Sure. हाँ पापा, पापा ये क्लास ले रहा हूँ मैं, एक क्लास ले रहा हूँ, हाँ 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 चलेगा ना, चलेगा। हाँ, ये बस एक क्लास ले लो पापा, मैं करता हूँ मैं आपको, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ 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 ठीक, रोहित ने कर दिया। हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। Yes. हाँ तो यहाँ पे आपका पहला एक सप्लाई चेन यूनिट यहाँ पे आ गया। ओके, ये क्या है अपना Mm-hmm. सप्लाई यूनिट वन,
फिर सप्लाई यूनिट टू। Okay, so this means जो ये वाला second वाला buyer है, that's a different buyer. It's not the same buyer which is in the first unit. नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं, वन मिनट, कंफ्यूज मत होना, एक मिनट The ये। first one, no, the first one is buyer, हाँ, seller. एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको। ये यही करना था, सप्लाई यूनिट, या इसको हम प्लानिंग यूनिट भी कहते हैं, यूनिट। ओके, Okay. प्लानिंग यूनिट वन, प्लानिंग यूनिट टू, प्लानिंग यूनिट थ्री। तो देखिए, जो फर्स्ट सिनारियो हमने जो देखा था ना पहले, ठीक है, मैंने फर्स्ट सिनारियो में क्या कहा था, आप डायरेक्टली गए और आपने लैंडलॉर्ड से मिला, आपने आपका जो भी ट्रांजैक्शन था, आपकी जो भी बिलिंग थी, डायरेक्टली वो सेलर के साथ में होगी। ओके, तो वहाँ पे बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। तो आपका जो सप्लाई चेन यूनिट है ना, वहाँ पे बहुत सिंपल है, वो Mhm. एक ही है, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दो लोगों के बीच में Okay. हो रहा है। गॉट इट। अब Okay. जो सिनारियो Mhm. सेकंड हुआ आया, तो सेकंड सिनारियो में तीन एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बायर का हुआ, ब्रोकर का हुआ और सेलर का हुआ। गॉट इट। फिर बायर ब्रोकर के साथ में मिला, Mhm. पहले बायर का ब्रोकर के साथ में कनेक्शन हुआ, तो एक वो सप्लाई यूनिट वन बना। ओके, Mm. फिर ब्रोकर का बायर के साथ में कनेक्शन Mm. हुआ, तो सप्लाई यूनिट टू बना। ओके, देन डायरेक्टली जो पैसे तो एक्चुअली बायर को सेलर को ही देना है ना, तो फिर क्या होगा, बायर का फिर फाइनल जो जो The मिल। second one should not be. Sorry to सेकेंड वन, interrupt. The हाँ। second one should be broker to seller. मैं सी, If दिस इज I'm not जस्ट, wrong. सी कंडीशन इज दैट आई एम हियर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नाउ इट बेस्ड ऑन योर सिनारियो, आपको जो No, करना that's है वो करो, ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैंने यहाँ बायर बायर और okay. ब्रोकर और बायर को क्यों रखा है मैंने, सॉरी, ब्रोकर और सेलर ना, सेलर होना चाहिए, Yeah, सेलर it should be सेलर seller to make सेलर। a chain key. हाँ Okay, हाँ, नहीं चलेगा। that is हाँ, नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो रखना है। व्हाट इज़ योर बिजनेस, okay. जैसा बिजनेस आप डिज़ाइन कर रहे हो आप वैसा करो, आपके पास में कस्टमाइजेशन का फुल इंडिपेंडेंस है, Okay. आपको जो करना है। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, Okay. जस्ट टेक इट एज अ इलस्ट्रेशन। ओके, दैट्स इट। यहाँ Okay. पे ये हो गया। ओके, अब मैं आता हूँ, अभी कैसा होता है, जब हम बिज़नेस करते हैं, ओके, तो बिज़नेस में Mm-hmm. टाइम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके, सो व्हाट हैपन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, द टाइम प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। सो टाइम के साथ में Okay. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल फैक्टर है, टाइम। क्यों है, बिकॉज Okay. कमिटमेंट है। जैसे आज मैं आपसे जुड़ा हूँ, ओके, हम लोगों का पहले कमिटमेंट Mm-hmm. हुआ कि मैं 8 बजे आपको ट्रेनिंग के लिए मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। गॉट इट। तो Okay. क्या, Mm-hmm. लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा है, फंड्स भी जुड़े हैं, सब चीज़ें जुड़ी है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर समथिंग हियर। ओके, Mm. एंड यू वांट अ सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर सेक यू आर हियर। तो यहाँ पे कमिटमेंट है, लेकिन कमिटमेंट बाउंड Okay. किससे है, टाइम से। ओके, सो Mm. इसी कारण से हम लोग यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। Okay. और ये जो Time टाइम series. का, हाँ, ये टाइम को हम, ये सिनोनिमस है किसका, पीरियड के साथ में। गॉट इट। अब ये टाइम ऐसी चीज़ है, ये 1 घंटे 2 घंटे वाली बात तो होती नहीं है जब बिज़नेस की बात करें। ओके, तो यहाँ पे Mm-hmm. एक कंसेप्ट है, Mm. ग्रैनुलरिटी। आप जब किसी ग्रॉसरी शॉप में जाते हो, ओके, एंड व्हेन यू आर परचेसिंग Mm-hmm. वीट राइस और एनीथिंग, आप वहाँ से एक दाना लेते हैं या फिर किलो में लेते हैं, या कुछ क्लस्टर्स में लेते हो, कि सिंगल दाना उठा के लेके आ जाते हैं। Weight में लेते हैं. ओके, तो
ग्रैनुलरिटी का मतलब क्या होता है? वैसे केजीज में लेंगे या हाँ बैग? हाँ, ग्रैनुलरिटी का मतलब होता बकेट। है टाइम बकेट। ओके, टाइम बकेट, गॉट इट। ग्रैनुलरिटी का मतलब होता है टाइम बकेट। ओके। बकेट का मतलब क्या? बकेट में पानी रहता है, उसी प्रकार से ऐसा बकेट जिसमें पर्टिकुलर हम्म। टाइम स्टोर्ड है। ओके, अब मैंने पहले कहा ओके। बिजनेस है, बिजनेस के लिए क्रिटिकल फैक्टर, क्रिटिकल फैक्टर क्या है? टाइम। ओके, यहाँ पे क्यों टाइम है? क्योंकि यहाँ टाइम। कमिटमेंट हुआ है। कमिटमेंट के कमिटमेंट होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टाइम सीरीज से हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो भी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, हम्म। यहाँ पे मैं हम्म। लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो ग्रैनुलरिटी, मैंने ग्रैनुलरिटी ये जो टर्म है एसएपी में ये चीज़ लाया गई है। ठीक है, ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये टाइम बकेट है। अब टाइम बकेट हमारे पास में कैसे हो सकते हैं? डे हो सकता है, जो सबसे बेसिक लेवल है। ठीक है, हम्म। उसके बाद में क्या हो सकता है? वीक हो सकता है। ठीक है, वीक हो सकता है। उसके बाद में वीक के भी दो प्रकार होते हैं। वीक को बाद में क्या बोलते हैं, हम्म। बाइफरकेट किया जाता है। कैलेंडर वीक होता है। आपके कैलेंडर में कितने वीक है अभी? 52। ओके, एक हफ्ते में सॉरी एक महीने में कितने वीक आते हैं? 4 ओके, वो भी या एक 5, हफ इट एक हफ डिपेंड्स। जो भी, तो 4 या, अच्छा आपने टोटल बता दिया ना, 52, छोड़ो, और 52 वीक्स। और 5 आपके एक महीने के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद में और एक कंसेप्ट आता है इसमें, टेक्निकल वीक, जो कि प्योरली वर्क ओरिएंटेड टेक्निकल होता है। वीक। हाँ, वर्क ओरिएंटेड होता है। अब ये जो टेक्निकल वीक होते हैं, अब ये टेक्निकल वीक गिनते कैसे हैं? ठीक है, आप जब पढ़ाते थे तो आपका वर्क टाइमिंग या फिर आपका स्केड्यूल कैसा रहता था? आपकी स्कूल बस 5 डे होती थी, फ्राइडे तक चलती थी, सैटरडे को छुट्टियाँ होती थी, या सैटरडे को भी कॉलेज स्कूल्स वगैरह होते थे, कॉलेजेस वगैरह? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 डेज हो गया। ओके, 5 डे इक्वल्स टू 1 टेक्निकल वीक हो गया। और यहाँ पे 7 डेज इक्वल टू 1 कैलेंडर वीक। कुछ समझ में आया? टेक्निकल वीक हम लोग टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं। देखते हैं। एज यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग, ओके। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर डिलीवरिंग योर सर्विस टू दोज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, so it's a 5 day working. That's why we are regarding it as a one technical week. Got it? But in calendar, you know, ओके। conventionally, what this English calendar we are globally it is being followed. So we know that when in within a week, 7 days were there. So 1 7 days that is equals to 1 calendar week. Got it? ये ओके। कंसेप्ट आएगा बाद में, बताता हूँ मैं आपको। वीक के आपने ये लिखा, उसके बाद में मंथ आता है। ओके, फिर उसके बाद में क्वार्टर्स आते हैं। एक साल में क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? ये 4। एक क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3 मंथ्स। क्वार्टर हो गया आपका। ओके, ये यहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो इसको इसी चीज़ को तो मैं बस ये बता रहा हूँ अभी टाइम बकेट से। ठीक है, आपकी टाइम बकेट में डेज आ रहा है, वीक आ रहा है, मंथ आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, ईयर आ रहा है। इसी के लिए हम लोग ओके। यहाँ पे इसको जब इंक्लूसिव कर दो तो यहाँ पे क्या बनती है? टाइम प्रोफाइल। क्या ओके। बनती है? टाइम प्रोफाइल। कुछ कोई भी प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले हमें टाइम प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, और वो टाइम प्रोफाइल ही सजेस्ट करती है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा और आपके फंक्शंस या आपके कैलकुलेशंस किस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे। गॉट इट? ओके। और ये हो गया, बकेट्स हो गए। अब यहाँ पे आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो बिजनेस की जो प्लानिंग होती है, इसके हॉरिजॉन
Now, what do you understand by the horizon? हॉरिजॉन का मतलब क्या होना चाहिए? उसकी रीच एग्जैक्टली exactly. कहाँ तक हाँ, कहाँ तक, पहुँचना चाहिए। कहाँ तक पहुँचना चाहिए, या हाँ कहाँ तक पहुँचना चाहिए और क्या होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली जब हमारी प्लानिंग होती है, तो जैसे जब मैं डे के लिए कोई चीज़ को प्लान करता हूँ, तो उसे हम जो डे से, जो मेरी प्लानिंग अगर डे से वीक के बकेट में चलती है, ओके, तो उसे मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, ऑपरेशनल हॉरिजॉन। गॉट इट। ओके ओके अब मैं वो ही बताऊंगा, ये आप कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे। और किसी किसी में वीक से मंथ में चलती है, तो उससे क्या कहेंगे आप, टैक्टिकल। कैटेगराइज। और अगर कोई चीज़ मंथ से ईयर तक के चलती है, या फिर ईयर से और कोई ईयर तक की चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर नहीं आएगा इसमें। क्वार्टर। ये जो मंथ रखा है क्वार्टर में मंथ आ जाता है ना। ओके हम्म, सो मंथ टू ईयर लाइक। हम्म। ओके स्ट्रेटेजिक हॉरिजॉन। ओके। राइजिंग। ऑपरेशन, ओके टैक्टिकल और हॉरिजॉन। अब मैंने जो ऑपरेशन बोला है, तो इसमें ओके बिजनेस के जो पैटर्न्स हैं, कौन से बिजनेस हैं, पैटर्न ऑफ बिजनेस फॉल इन पर्टिकुलर हॉरिजॉन, पैटर्न ऑफ बिजनेस। अभी आपके यहाँ सुबह दूध वगैरह आता होगा, ओके, तो वो जो जी। रिक्वायरमेंट है, वो डेली बेसिस पे होती है, वीकली बेसिस पे मिल जाता है आपको, कि हफ्ते वीक में एक ही बार आता है या डेली आता है? तकरीबन डेली। डेली राइट, ओके। तो डेली, तो जैसे मिल्क हो गया, फिर वेजिटेबल्स है, ओके, फिर क्या हो गया, बर्गर्स हो गया, मसाले हो गए, कोई भी, ओके, एनीथिंग। अब मैं यहाँ पे एक्सेट्रा कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पेस्ट हो ओके गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ओके। ये क्या है, डेली बेसिस पे आते हैं। तो इसे हम ये जो बिजनेस में आता है ना, तो ये जो गुड्स होते हैं, ये पर्टिकुलर जो गुड्स होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, इन्हें बोलते हैं FMCG। और इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। एग्जैक्टली, गुड्स, कंज्यूमर ओके। गुड्स। तो ये होती है, इसकी जो प्लानिंग होती है, और इस प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल मॉड्यूल दिया गया है IBP में। IBP मॉड्यूल जो एग्जीक्यूट होता है इस पे, ये होता है डिमांड सेंसिंग का, ओके, डिमांड डिमांड सेंसिंग, से। ओके सेंसिंग, ओके। अब यहाँ पे टैक्टिकल, अब टैक्टिकल जो होती है वीक से मंथ में होती है, ओके। अभी आप जब कोई स्टोर का सामान लाते हैं, ग्रोसरी का जब सामान लाते हो, तो वो हर दिन उठा के लाते हो, हर दिन गेहूँ चावल हर दिन उठा के लाते हो, या महीने में, या कभी ये स्टोर बना के रखते हो उस चीज़ का? महीने में कभी लाइक एक दो बारी। ओके, तो इसका मतलब है कि शायद वो हफ्ते में भी हो सकता है, या फिर महीनों तक भी चला जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे आ जाता है ग्रोसरी, ओके। और क्या चीज़ आप यूज़ करते हो, जो मैंने पेपर का बिल हो गया, मैंने तो यूज़ करता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। डिफरेंट टाइप्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ बिल्स। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सिटी हो गई, और फिर क्या, कोई भी चीज़ हो सकती है, वाईफाई का बिल होगा, ओके। और यहाँ पे ये FMCG में आता ज़रूर है, लेकिन ये कंसिडर नहीं किया जाता, ओके। ये भी FMCG ही होता है, ओके ओके। तो अब इसे करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिमांड, क्या करेंगे, डिमांड प्लानिंग, प्लानिंग प्लानिंग।
Okay. और ये अब ईयर टू ईयर में क्या हो सकता है, मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है 1 साल का, तो वो क्या करेगा, Mm-hmm. 1 साल के अंदर में मुझे देगा। ओके, या तो Mm-hmm. फिर छोड़ो, प्लानिंग के एस्पेक्ट से मैं Mm-hmm. बता रहा हूँ। सपोज आपका बिजनेस है, ओके, नाउ आपका बिजनेस बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, और वो अपने खुद से एक माइलस्टोन्स या Mm-hmm. फिर कुछ क्रिएट करके रखना चाहता है मार्केट में। ओके, सो जो Okay. हायर सप्लाई कंट्रोल टावर पे टावर प्लानिंग जो होती है, जो कॉरपोरेट मैनेजमेंट लेवल पे होती है, ओके, इससे हम क्या करते हैं, वी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपनीज benchmark performance performance from year to several years. Yes, okay, several years। तो इसे यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, डिमांड प्लानिंग में एग्जीक्यूट करते हैं। फाइन, ओके, मैं अभी तक बाकी बिजनेस मॉडल पे जा ही नहीं रहा हूँ, डिमांड सप्लाई और प्लानिंग में अभी जा ही Mm-hmm. नहीं रहा हूँ, मैं बस अभी आपको इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ इन सब चीज़ से। ओके, तो अभी Okay. आपको क्या क्या समझ में आ गया, अभी जितना भी मेरा लेक्चर हुआ है इसमें। ओके, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टेक अवेज एग्जैक्टली यू गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट। सो प्लीज रिव्यू ऑल द थिंग्स व्हाट एग्जैक्टली आई स्पोक इन नटशेल। Mm-hmm. आपको जो जो चीज़ समझी आप बताइए। Um, I've understood about the business planning horizon and time horizon also. जो time bucket का use क्यों है और कैसे करने वाले हैं, that we'll understand. Uh, I've understood as in जो आप मुझे ओके, समझाने की तो कोशिश कर रहे मैंने हैं जितना भी स्क्रीन सेशन के लिया थ्रू। है, जो जितना भी सेशन मैंने आपका लिया है शुरू से लेके अभी तक के, वो चीज़ समझ में आई है आपको? जी क्योंकि अभी मैंने आपके जी। मैं आईबीपी पे आया ही नहीं हूँ अभी, ठीक है, ना मैं आईबीपी के हम्म। प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ना ही उसके एलिमेंट्स पे आया हूँ, ठीक है। तो ये ओके एग्जैक्टली ये मैंने आपको प्रायर इंट्रोडक्शन दिया है, बिकॉज मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं जो भी चीज़ करूँगा वो टोटल आपका पूरा पैसा बर्बाद है। ओके, और अभी वही चल रहा है, ओके बिकॉज मैं बहुत से प्रोफेशनल जो मुझे मेरे साथ भी काम करते हैं, दे डोंट हैव आइडिया। तो पहले ओके ये वाले जो कुछ ये मैंने बेसिक एलिमेंट्स आपको बताया है, और भी उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे वो मैं आपको ओके इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इन द फोर्थ कमिंग सेशन। ओके, ओके ओके, ओके तो ओके। शैल वी डन फॉर टुडे, पैकअप करें आज, यस हाँ, 1 घंटा हो गया we है। can do that. ओके, And मेरे it's more than that, I प्रेजेंटेशन, think, from your end. हाँ, नहीं, सी वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ओके, एंड दिस एक्सेल शीट ऑल्सो आई विल शेयर अलॉन्ग विथ यू, ओके, and also I have certain Okay. questionnaires what exactly Okay. in the corporate interview when you're going to face, okay, so it will aid you that Mhm. how you have to perform and how you have to present Okay. yourself, okay, so ये तो इंट्रोडक्टरी था, Okay. मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर सकता बिकॉज अदरवाइज Okay. ज़्यादा हैंग हो जाता। Okay. ओके, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Okay. टाइम। Just need to know what's the class for या tomorrow, the same time, या दस and we'll be having how many classes a week? classes a week, see it's a 30-hour session, what exactly we are going to do, okay, Okay. 30-hour session, so yeah, daily we So will be there, no, daily I mean as in like 7 days a week or 5 days a week, how it will go? see now it based on my availability also, okay, it will be a 7 days a week, Okay. okay, but the condition is Okay. that when we look after the weekends, okay, I will let you know, we can conduct in between in the daytime also as well, if based on your availability as well,
Okay. Okay. But for So that, you need to inform me prior because there is I a will, time no, no, I difference. will inform, I will inform. Don't worry, I will inform. Whenever, Okay. and Okay. already the Okay. group has been created, no? I will let you know everything. Okay. Yes, 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 Yeah, yes. I have the I'll part. wait for the recording of today's program. Yeah, You sure. can Yeah, just sure. share that I in the will group share. I will itself share with you. the link. Yeah, I will share you. These are the things what Okay. exactly I have created for today. But the thing is that already you have moved on to the IBP training previously, no? So I think it's a shit one कि मैं Mm-hmm. जबरदस्ती वही वही चीज़ present करूँ. So I am just going on to the technicality and the Okay. necessary technicalities Okay. what exactly we have to encounter in the forthcoming future. Okay. 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 Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you for your time. Okay. Thank you. Thank you so much, sir, for your Yeah. time. Okay. So I just need to know Thank you. what is your feedback for today's session? Is it okay, or I need to have any modification? No, actually, you are of prime importance for me. That's why I'm asking. So far, I have understood what you want to convey me through the Excel sheet and everything. Rest, I hope it will continues the same in the technical part also, where I have to deal more. Yeah, I sure, believe. sure. In between, just interrupt me if you like or if you don't like. If you want something, any amendments need to be made in that particular session. Definitely, I will. I can. Sure. Okay. I'll keep you posted. Thank you. Okay. Yeah. Sure. Thank you, ma'am. Thank you for your time. Thank you.